Hello guys, I'm your friend and FSSAI guide Sagar Shirke sign in and thank you so much for watching this video and I'm your host and host Sagar Shirke FSSAI guide sign in. So let's talk about the most important topic. अगर आप यूरोपियन यूनियन में अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो जो नॉवल फूड है जो न्यू है एंड यू नो व्हाट उस मार्केट के लिए अगर न्यू है और अगर उसके लिए अगर आप अप्रूवल चाहते हैं तो इसके लिए आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है द नॉवल फूड रेगुलेशन EU 2015 /2283 ये जो ये है उनका जो लॉ है हम आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उसके अंदर किस तरीके से आप एक नॉवल फूड के लिए अप्लाई कर सकते हो यूरोपियन यूनियन के अंदर तो उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ आई एम फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड रेगुलेटरी एक्सपर्ट सागर शिर्के साइन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो देखिए रेगुलेशन ईयू 2015 एंड 2283 जो है जो न्यू novel food regulation is in the force but will be fully implemented January 2018 को fully implemented हुआ ये food as defined in registration EC 178/2002 के अंदर जो डिफाइन किया गया है उसी के अंदर ही बताया गया है। ठीक है, what is food और उसके बारे में डिटेलिंग एंड food additives flavoring enzymes extraction solvents और GMOs not in scope। ठीक है, तो उनके लिए स्कोप नहीं है तो इसे बताया गया है और मेडिसिनल हर्ब्स दैट इज ड्रग्स आर नॉट फूड। ठीक है, ये है सेकंड हम अभी देखने वाले कि रेगुलेशन इसी जो 178/2002 के अंदर क्या है। देखिए आर्टिकल 2 डेफिनेशन ऑफ फूड दी गई है। फूड मींस एनी सब्सटेंस or product whether processed is partially processed or unprocessed intended to be reasonably expected to be ingested by humans. Food includes drinks, chewing gums and any substances including water intentionally incorporated into the food during its manufacture, प्रिपरेशन और ट्रीटमेंट। ठीक है, तो उसे फूड कहा जाता है। तो ये देखिए ये एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ ईयू फूड लॉ है वो उसके अंदर दी गई है। द कंसेप्ट ऑफ द नॉवल फूड, तो देखिए द नॉवल फूड मीन्स एनी फूड दैट वाज नॉट यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन टू अ सिग्निफिकेंट डिग्री within European Union before 15 May 1997 falls at least to one of listed categories। ठीक है, तो अगर वो यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर कंजम्पशन हिस्ट्री नहीं है ह्यूमंस की 15 मई 1997 के पहले तो यस दैट इज अ नॉवल फूड कहा जा सकता है एज पर यूरोपियन यूनियन लॉ। Then novel food categories. So you can see food or modified molecular structures. Food consisting of isolated form are produced from microorganisms, fungi, algae, material from minerals origin. ठीक है, plant or their parts without history of use. Animals are their parts without history of use. Cell or tissue culture भी इसके अंदर आ सकता है। इन स्पेशल केस नॉन ट्रेडिशनल जो प्रोपेगेटिंग प्रैक्टिसेस है वो भी इसके अंदर आ सकती है। नॉवल फूड कैटेगरीज लाइक फूड प्रोड्यूस्ड विद अ नॉवल मेथड्स which significantly changes the food's consumption or structure उसे कहा जा सकता है। And one more is a nanomaterials like prior use only in as a food supplements, vitamins and minerals. In food supplements, special foods or for enrichment produced with a new method or which are in nanoforms इसे कहा जा सकता है novel food। ये कैटेगरी के अंदर आता है। कंपैरिजन विद द ओल्ड सिस्टम, तो देखिए द इन ओल्ड सिस्टम अ न्यू centralized system request submitted to the European Union Commission EFSA responsible for risk assessment and general authorization the union list। ठीक है, ट्रेडिशनल फूड फ्रॉम थर्ड कंट्रीज ये इसको कंसिडर किया जा सकता है। मेंबर स्टेट्स है स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ नॉवल फूड स्टेटस एंड कमीशन में डिसाइडेड टू इफ फूड इज अ नॉवल फूड। ठीक है, तो मेंबर स्टेट्स है वो डिसाइड करते हैं कि फूड इज अ नॉवल फूड और अ ट्रेडिशनल फूड। अंडरस्टैंड द यूनियन लिस्ट ऑफ अ नॉवल फूड, तो यू कैन अंडरस्टैंड द इनिशियल लिस्ट 1 जनवरी 2018 को जो होगी है लिस्ट उसे वो लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। Current authorization and the substantial equivalent foods notified to the European Union Commission with the specifications so that you can understand and updating the list with new food if food does not pose safety risk to health, food does not mislead the consumer, food not nutritionally disadvantageous compared to existing food, तो इसे भी कहा जा सकता है। ठीक है, then traditional food from third countries, so you can see a simplified notification produced possibly if food originated from the primary production, has history of safe food use, has consistently continuously food
has been food as for over 25 years as a part of customary diet by significant number of people. तो इसका अगर ट्रेडिशनल अगर कोई रेफरेंस मिलता है then yes, अगर कोई रेफरेंस मिलता है तो ये ओरिजिनेशन प्राइमरी प्रोडक्शन के यूज के अंदर अगर आप दिखा सकते हो तो डेफिनेटली ट्रेडिशनल फॉर्म के अंदर आप इसको एक एज नॉवल फूड कंसिडर कर सकते हो। रेगुलेशन यूरोपीय ये जो है उसके अंदर आर्टिकल 3 है other definitions like a primary production. What is primary production? Means the production, rearing or growing of primary products including harvesting, milking and farm animals production prior to slaughter. It also includes hunting and fishing and the harvesting of wild products. Then definitely this is the primary production. The notification is sent to European Union Commission with the information on the applicant name, address, the food, name, description, and detailed composition of the food, country, countries of origin of the food, documented data on history of safe food use, proposal for intended use, inclusive conditions of use, labeling and labeling purpose. So this is the notification. ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन कमीशन जो है वो सेंड करती है अराउंड द एप्लीकेशन फूड जो लेबलिंग पर्पस है अकॉर्डिंग टू दैट. The notification process, you can see the commission forward the notification to the member states MS and to the EFSA. ऑब्जेक्टिव है उनका may be presented within 4 months. दिल्ली जो हुआ है reason concern on safety EFSA guidance under preparation. No objectives includes inclusion in the union list and objections applications to be submitted data to answer MS's concerns. ठीक है. Then the notification process. So you can see the commission to forwards the application to EFSA and makes it available to the MS. ठीक है. EFSA opinion in 6 months. History of safe food use. ठीक है. Composition and the condition of use. Nutritionally not disadvantageous. ठीक है. And commissions to submit draft implementing act for or authorization in 3 months. कॉमिटोलॉजी प्रोसीजर्स जो है उसके थ्रू ये प्रोसीजर हो सकती है. एंड देन द फुल ऑथराइजेशन प्रोसीजर ये आप देख सकते हो कि इसे कैसे किया जाता है. अ रिक्वेस्ट इज सेंड टू द यूरोपियन यूनियन कमीशन विद इंफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेंट नेम एड्रेस फूड name description food and the process production process whatever what you have and detailed composition of the food scientific evidence demonstrating safety proposal for conditions of use labeling analysis method when appropriate. Okay. Then full authorization procedure. The EFSA to carry out safety assessment as a safe as a comparable food on the market. Composition and conditions of use does not pose a risk to human health. Not nutritionally disadvantageous. EFSA opinion in 9 months. Commission to present a draft implementing act for authorization in 7 months. Comitology procedures. ठीक है. Then additional noteworthy rules. So you can understand by 1st January 2018 Act on the requirement for representation of the notifications and application procedures of for their validation information exchange with MS etc. ठीक है. तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर यूरोपियन यूनियन की मिल जाएगी ये फैसे. ठीक है. The possibility to extend set time limits for the EFSA opinion commission's draft proposal. तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. पॉसिबल फॉर डाटा प्रोटेक्शन जो है वो 5 years के लिए है एंड ओपन फाइल्स जो होते हैं वो ट्रांसफर्ड अ न्यू सिस्टम जनवरी 2018 को इम्प्लीमेंट की गई है. देन द केस इन इंसेक्ट्स आप देख सकते हो जैसे कि करंट नॉवेल फूड रेगुलेशन है EC 25897 जो जो अनक्लियर एज रिगार्ड्स होल एनिमल्स एग्जांपल इंसेक्ट्स है. Some European Union states tolerate whole insects as food. ठीक है. न्यू नॉवेल फूड रेगुलेशन यूरोपियन यूनियन 2015 2283 जो क्लैरिफाई करता है कि insects are novel foods unless proven history of food use before 1997. अगर है तो डेफिनेटली वो जो है वो नॉवेल फूड के अंदर आप ये कर सकते हो अगर एक इंसेक्ट है. मे क्वालिफाई एज अ ट्रेडिशनल फूड इन थर्ड कंट्रीज. ठीक है. एंड एप्लीकेबल फ्रॉम 1st January 2018. Then you can understand the case in insects. A limited number of insects under discussion. For instance, the Belgian list that you can see यहाँ पर कुछ Belgian list है. हाँ, हाउस क्रिकेट है, अफ्रीकन माइग्रेटरी लोकस्ट है, सुपरवर्म है, मिलवर्म है, लेजर मिलवर्म है, पैक्सवर्म है, अमेरिकन डेजर्ट लोकस्ट है, बैंडेड क्रिकेट है,
लेजर मैक्सिमम सिल्कवर्म। तो ये सब जो है ये लिमिटेड नंबर से जो इंसेक्ट जो हमारे अंदर जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो अलाउड है, ठीक है। इंसेक्ट फ्रॉम जनवरी 2018 onwards, introduction of insects whole part or processed from third countries to European food market through the notification procedure possibly, ठीक है। In all European Union MS insects to be used as a food whole or as a part or a process need authorization। तो देखिए, तो जैसे कि आप अगर एक इंसेक्ट है तो उसका कौन सा पार्ट आप यूज करते हो एज अ फूड, एज अ पार्ट ऑफ फूड, तो वो भी आपको 3 जनवरी जो है 2018 को जो लिस्ट दी गई है उसके अंदर आपको पूरा का पूरा क्लैरिफाई किया गया है। आपको उसी के हिसाब से अगर आप कोई इंसेक्ट ऐड कर रहे हो तो उसका आपको रेफरेंस देना पड़ता है। EFSA guidance on dossier of for safety assessment। Then you can see introduction and legal basis. So based on the Council Directive 97/78, European Commission Article 16.1A। तो ये क्या कहता है? The food stuff and pet food of animal origin introduced from third countries for personal consumption, ठीक है, carried by travelers in luggage or vehicles possible to enter European Union territory via any BCP जो border पे जो ये होती है उसके लिए exempted from the veterinary border inspection and controlled by customs upon entry। Current rules have been laid down by Commission Regulation European Union number 206 of 5th March 2009 on the introduction into the community of personal consignments of products of animal origin and amending Regulation European Commission number 136 slash 2004। This regulation lays down rules concerning the production introduction into the community of personal consignment of products of animal origin of a non-commercial characters which form part of travelers' luggage or are sent as a small consignment to private persons are ordered remotely, for example by mail, by telephone or via the internet and delivered to the consumer। Then, introduction and legal basis. The regulation clearly explains to the general public the rules concerning the introduction of animal products into the European Union, namely, travelers are not allowed to bring in meat, milk, or their products unless they are coming with less than 10 kilograms of these products from the Faroe आइलैंड, ग्रीनलैंड और आइसलैंड। अगर यहाँ से आ रहे हैं तो ही अलाउड है, वो भी 10 किलोग्राम्स के हिसाब से ही उनको अलाउड किया गया है। Then the animal population has not been vaccinated against the pathogens। ये कुछ रूल्स है। डिसीज पैथोजेंस मूव स्प्रेड एट द अनबिलीवेबल रेट। अगर ये हो रहा है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ डिसीज आउटब्रेक होता है तो उसके अंदर ये कुछ है दिया गया। द एनिमल पॉपुलेशन हैज नॉट बीन vaccinated against the pathogens, then disease pathogens move spread at an unbelievable rate, cause major economic losses to agriculture, food industry, and tourism, compulsory slaughter of millions of animals, ठीक है। The biggest problem in case outbreak 2 आप देख सकते हो कि 2001 FMD outbreak in जो है United Kingdom caused a depopulation of 6 million animals, depopulation of 120 to 300 farms and 60 suicides जो हुए थे। कॉस्ट अराउंड $5 million हुई थी उस वक्त 2001 को, ठीक है, outbreak में। तो introduction and legal basis code। So this also is an exemption for powdered infant milk, infant food, and special food required for medical reasons if weighing less than 2 kilograms, and provided that such products do not require the refrigeration before opening, that they are packaged proprietary brands and products for direct sale to the final consumer and the packaging is unbroken unless in current use, ठीक है। तो अगर करंट यूज में है, पैकेजिंग है, अनब्रोकन है, ठीक है, तो उसे कंसिडर किया जा सकता है। देन इंट्रोडक्शन एंड द लीगल बेसिस 5, a special pet feed required for medical reasons 2 kg total weight per person traveling, and provided that the product does not require the refrigeration before consumption। तो ये है, the product is in the commercial branded, the packaging is unbroken and unless in current use, ठीक है।
Then you can see the introduction, the legal basis. Okay, the fishery products. So you can see the including fish and certain shellfish such as prawns, lobsters, dead mussels, and dead oysters. Travelers are allowed to bring up to 20 kilograms or the weight of one fish if this is higher. However, there is no such weight restriction for travelers coming from the Faroes Island or Iceland. Okay? तो fish must be gutted. तो ये इसकी छोटी सी रिक्वायरमेंट है एंड दे है इंट्रोडक्शन एंड लीगल बेसिस 7 पे आप देख सकते हो फॉर अदर एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज हनी लाइव ऑस्टर लाइव जो मसल्स एंड स्नेल्स फॉर एग्जांपल ट्रैवलर्स आर अलाउड टू ब्रिंग अप टू 2 किलोग्राम्स जो है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर अलाउड है अगर इफ दे आर ट्रैवलर्स bivalves live mussels and oyster eggs products frogs legs hind part of the frog with the skin internal organs removed honey insects meat snail meat तो edible land जो snails होते हैं shelled उसके लिए ये है 2 kilograms के up to ये allowed है देन इंट्रोडक्शन एंड लीगल बेसिस 8 जो है वो अब हमें हम करने वाले एक्सप्लेन सो फॉर सर्टेन प्रोटेक्टेड स्पीशीज एडिशनली रिस्ट्रिक्शन में अप्लाई फॉर द एग्जांपल कैवियर ऑफ स्ट्रेजियन जो है स्पेसिस है स्ट्रेजियन स्पेसिस जो 125 ग्राम पर पर्सन वो कैवियर जो है वो अलाउड है और कैवियर काफी महंगी चीज होती है दैट यू इफ यू नो जो फिश से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इफ यू wish to send by post regardless of the amount of bring is more than 125 grams in your personal luggage you must have the correct CITES Convention on International Trade in Endangered Species permits or all of the product will be seized ठीक है अगर परमिट नहीं है CITES से तो endangered species का जो होता है तो yes definitely आपका जो प्रोडक्ट है वो सीज किया जाएगा देन है इंट्रोडक्शन एंड लीगल बेसिस 8 के अंदर ही द रूल्स डू नॉट अप्लाई टू एनिमल प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्टेड between the 28 European Union states or for animal products coming from the Andorra and Norway, San Marino and Switzerland जो यहाँ पर अगर है तो और यहाँ पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते ठीक है 28 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के अंदर ठीक है देन देखें कोलैबोरेशन बिटवीन द नेशनल इंस्टीट्यूशंस तो ये पूरा यूरोपियन यूनियन का आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कोलैबोरेशन है ठीक है लातविया बॉर्डर जो क्रॉसिंग पॉइंट्स है तो यहाँ पर ये पूरा आप देख सकते हो यहाँ पर काफी सारा ये बॉर्डर शेकिंग होता है देन है कोलैबोरेशन बिटवीन द नेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक ईस्टर्न बॉर्डर जो सीसीपी है तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ चेक पोस्ट है तो यहाँ पर आपका जो पोस्ट है वो पोस्ट है उसके अंदर वेरीफाई किया जाता है कि आप क्या क्या ये कर रहे हो कस्टम्स लाइक कस्टम्स ठीक है लेकिन कोलैबोरेशन फॉर्म में द कंट्रोल सीक्वेंस ऑफ द बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट तो देखिए बॉर्डर गार्ड्स जो होती है रेडियोलॉजिकल कंट्रोल इमिग्रेशन कंट्रोल बॉर्डर सर्विलेंस ठीक है ये बॉर्डर पे होता है देन फूड एंड वेटरनरी सर्विसेज जो है veterinary and safety controls and on food and good safety control on non-human consumption products and control of the compliance with the phytosanitary quality and classification requirement जो है वो यहाँ पर फॉलो किया जाता है देन हाँ देखिए आप कस्टम्स के अंदर जो है वो क्लियरेंस दिया जाता है स्कैनिंग किया जाता है देयर प्रोडक्ट्स एंड और फिजिकल कंट्रोल देखा जाता है कि एग्जैक्टली पेट एनिमल्स कंट्रोल्स है प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल ओरिजिन है इन लगेज है या नहीं है कितना ग्राम है तो वो पूरा उसका कैलकुलेशन और उसका पूरा वो देखा जाता है ठीक है फॉर सेफ्टी पर्पज देन देखिए नॉर्मेटिव बेसिस फॉर कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स तो इसके अंदर देखिए रेगुलेशन ऑन 2006-2009 इन फोर्स फ्रॉम 1 मई 2009 यहाँ पर जो प्रिस्क्राइब किया गया है तो वहाँ पर वेटरनरी के लिए है जो लैथबियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वायलेशन कोड्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं रेगुलेशंस ऑफ कैबिनेट जो नंबर है वो यहाँ पर दिया गया है देन देखिए normative basis for control of products of animal origin in luggage तो इसके लिए भी यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बताया गया है कि इंटरजेंसी जो एग्रीमेंट है कंक्लूडेड ऑन 8 नवंबर 2013 बिटवीन द एसआरएस एंड एफपीएस regarding luggage control of the introduction of the domestic paid animals producers on cooperation एंड सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है कि कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज ट्रांसफर एंड लिक्विडेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स
registration and accounting of the performed controls, exchange of information, consultation, and the contact persons, training and supervising measures, cooperation with the postal service, conditions on collection, transportation, storage of the removed products, preparation of the reports of EC and FPS. Instructions of the National Customs Board given to custom officers in 2013, 2013 instruction number, new interagency agreement, cooperation record keeping conditions on the collection, transportation, storage of removed products and reports, etc. Then you can see the luggage inspection principles. Then interview with the reminder of the prohibited products, random check, उनके ऊपर एक्शन किया जाता है. Action in the case of the detection of a prohibited products, request to be thrown out, तो उसे फेंकने की जो ये है वो दी जाती है या फिर सीज किया जाता है. Then person from a third country, ठीक है, customs officer interview travelers and inform about the ASF and limitations. Like a client says yes, and अगर client yes करता है तो देखिए traveler voluntary throws prohibited products in container, and customs hands over the voluntary thrown products to food and veterinary services. Food and veterinary service supervisor destroying on the POAA AO. अगर क्लाइंट अगर नो बोलता है तो कस्टम परफॉर्म्स फिजिकल एग्जामिनेशन भी उसका किया जाता है. और customs अगर issue protocol on administrative violation and confiscates the goods. Customs act in accordance with regulation on the handling of the confiscated products जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं. Then you can see the visual luggage search and an in-depth luggage search in accordance with the internal instructions. देखिए visual luggage search in case consists one or more actions. General inspection on the object including using customs technical equipment, weighing, scanning, and service dogs to detect consignments and clarify the need for in-depth inspection required or not. Visual inspection also includes the identification of the vehicle and comparison of number insects of the outside the vehicle cargo compartment, opening inspection of personal belongings, baggage, international mail, also by using X-ray. Counting and checking of the cash, namely, it is a visual inspection without opening containers, trailers, boxes, or bags. In-depth luggage search consists of two or more actions, including visual inspection activities as well as a partial or full control of the object based on the identifies risk, including products, counting, measuring, packaging, opening at a random, complete drop loading of goods, or opening of all packaging complete vehicle, inspection, product sampling. ठीक है, अगर वो मिलता है तो अगर इन डेप्थ कब किया जाता है आपको देखिए तो डिस्चार्ज प्रोडक्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई 2013 टू 31 दिसंबर 2017 के अंदर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा चार्ट है कि 2014 को जो है 50 जो है ये इतना केजी जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया है. आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा तो 2014 के अंदर किया गया है, फिर 2015 को कम आया, 16 को भी कम आया, लेकिन 2017 को बिल्कुल कम आया. तो ये चीज है कि प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय किए जाते हैं. द प्रोडक्ट वे इन द सीसीपी, ठीक है, तो प्रोडक्ट वे जो है वो सीसीपी जो पहले डिटरमाइन किया जाता है प्रोडक्ट, उसके बाद थ्रोन अवे किया जाता है प्रोडक्ट, उसके बाद जो है वो इंसनेशन किया जाता है, प्रोडक्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाता है. देन द रिजल्ट्स ऑफ कंट्रोल्स आप देख सकते हो या कुछ लोग कहाँ कहाँ क्या क्या छुपा छुपा कर जो है वो इलीगली जो है वो ये करते हैं अपने टायर के अंदर वगैरह वगैरह. तो ये चीज़ है. Then what is the ABP? The animal byproduct. So you can see the product of an animal, not destined for human consumption, but at the same time was intended for human consumption. Products or foods or of animal origin, originally meant for human consumption, but withdrawn for not allowed reasons, but because it's unfit to eat. Based on regulation European Commission no 1069 and 2009 ABP categorization category 2 material imported or introduced from a third country
and fail to comply with the community veterinary legislation for in their product. तो देखिए कैटेगरी टू जो है मटेरियल नॉट फॉर एनिमल कंजम्पशन, तो वो एबीपी है, ठीक है. देन यू कैन सी custom actions regarding ASF. So luggage control is within the customs competence at the customs control points only. Then the control is performed on the basis of the interagency agreement concluded between SRS and FPS on 8 November 2013. The control of the travelers from Russia and Belarus luggage is performed on the basis of the written request of the FPS and instruction issued by the National Customs Board to customs officers. In 2015, the National Customs Board has not delivered the additional personal to luggage control because this task is constantly performed by a definite number of customs officials. In 2015, the number of the in-depth luggage controls and the consignments has been decreased. Records on amount of animal origin products per week emailed to FVS Central Office. Then you can see the sources of information for customs official. There is you can see the training by FVS official, training by NCB officials. Then you can see the information from NCB. The information is in document sharing. सर्वर जो है DKS उसके ऊपर शेयर की जाती है एंड द इंटरनल रेगुलेटरी इंटैक्टमेंट्स जो होती है न्यूज़ लेटर से वहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन की जाती है. द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कस्टम्स ऑफिशियल्स के थ्रू की जाती है, ट्रेनिंग्स के थ्रू और इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनसीबी कि कहाँ कहाँ पर लोग छुपा के लेके आ सकते हैं और कैसे हमें उनको अवॉइड करना है. देन यू कैन सी फूड एंड वेटरनरी सर्विसेज बॉर्डर कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, एंड बॉर्डर इंस्पेक्शन पोस्ट. You can see the authorities. Exchange of information on the current events, solving major challenges, experts and management meetings on the general issues, conceptual regulations and the decision making, organizations of training, updating of information ये की जाती है. Exchange information on the latest development at the regional level, solving pending problems, regional experts and the management meetings. डेली एक्सचेंज होता है ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिजॉल्विंग पेंडिंग प्रॉब्लम्स बीआईपी एंड सीसीपी जो मैनेजमेंट है उसके यहाँ पर की जाती है मीटिंग्स के थ्रू एंड द इंफॉर्मेशन एजुकेशन के थ्रू भी दिया जाता है. नेशनल कस्टम्स जो होती है बोर्ड ऑफ एसआरएस जो नेशनल कस्टम्स है बोर्ड सेंट्रल, वहाँ पर कस्टम्स कंट्रोल पॉइंट जो है डिवीजन है रीजनल है उसके थ्रू किया जाता है. कस्टम्स जो कंट्रोल है पॉइंट्स सीसीपी उसके थ्रू भी ये इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज की जाती है बिटवीन द कॉम्पिटेंट, ठीक है, थ्रू ऑफिसर्स ऑथोरिटी भी किया जाता है. Then देखिए there is the meetings, the quarterly meetings with the border guards, police and FPS at the regional levels. Meetings notes are available also in the web page जो है rs.gov.iv जो है. तो यहाँ पर भी जो पूरा पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर किया जाता है. जो बॉर्डर के जो गार्ड्स होते हैं उनके थ्रू भी उनके लिए भी मीटिंग्स की जाती है. The rules informants जो है first जो informants the rules governing the introduction of the personal consignments of meat, milk, or their products in vital provisions include the organization of controls at European Union entry points to detect the presence of illegal consignments of meat, milk, or their products. ठीक है, तो ये rules of consignment यहाँ पर कुछ दिया गया है. You can see. Then rule and for informants यहाँ पर है mechanism used to identify illegal personal consignments of the meat and dairy products. यहाँ पर जो मेनली है रैंडमाइज जो सर्चेस किए जाते हैं, टारगेटेड कस्टम सर्चेस किए जाते हैं, स्कैनिंग इक्विपमेंट किया जाता है, बट ऑल्सो इन सम मेंबर स्टेट्स जो डिटेक्टर डॉग्स होते हैं वो भी यूज किए जाते हैं फॉर डिटेक्टिंग इलीगल कंसाइनमेंट्स, ठीक है. Then rules enforcement 3 यहाँ पर whereas the necessary the deployment of appropriate detection aids such as scanning equipment and detector dogs to screen large quantities of luggage. तो यहाँ पर देख सकते हो आप रैंडमाइज जो कस्टम सर्चेस है वहां पर ज्यादा मिलते हैं. देन जो टारगेटेड कस्टम सर्चेस है उनके यहाँ पर भी ज्यादा मिलते हैं. डिटेक्शन डॉग्स है उनका रेट कम है लेकिन ये भी इलीगल जो कंसाइनमेंट्स है वो पकड़ते हैं और स्कैनिंग इक्विपमेंट्स के थ्रू भी काफी सारे जो इलीगल कंसाइनमेंट्स है वो सर्च आउट किए जाते हैं. देन रूल्स एनफोर्समेंट यहाँ पर देख सकते हो कि the seizure and destruction of a personal consignments that are found to be in a breach of the rules. अगर वो ये किया जाता है तो उसको फर्नेस के अंदर या फिर किसी डिस्ट्रॉय किया जाता है, पूरा उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है सीज किया हुआ प्रोडक्ट, ठीक है.
देन रूल्स एंड फॉर्मेट्स आप देख सकते हो कि मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट दोज रिस्पांसिबल फॉर द इलीगल कंसाइनमेंट्स मे बी लायबल फॉर कॉस्ट और पेनाल्टीज। अगर कोई इलीगल कंसाइनमेंट अगर मिलता है तो ये वो कंसाइनमेंट लायबल होता है एक कॉस्ट और पेनाल्टी के लिए। तो ये भी यहाँ पर चीज है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव वायलेशंस, यहाँ पर रिजल्ट्स आप देख सकते हो कि लैट्वियन एडमिनिस्ट्रेटिव वायलेशन कोड्स सेक्शन 108, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव लायबिलिटी for violation of requirements on the introduction of products of animal origin for personal human consumption are varying with confiscation confiscation of the products. In 2015, three cases: can meat 196 kg, can meat 119 kg, can meat जो है टर्की बीफ है वो 2 kg। तो इन थ्री केसेस के अंदर जो है वो वायलेशन आपको देख सकते हो कि लैटिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वायलेशन कोड। तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है तो आप देख सकते हो कि एएसएफ सोर्सेस है, द स्प्रेड ऑफ डिसीज है विद मीट प्रोडक्ट्स एंड फूड वेस्ट। अप टू 85% ऑफ केसेस जो है वो मीट एंड मीट प्रोडक्ट से ही वो जो ये है केसेस है वो आते हैं डिसीजेस के। लाइव पीस जो होते हैं अप टू 14% उनसे जो डिसीजेस होते हैं वो स्प्रेड होते हैं। देन कंटामिनेटेड जो ट्रांसपोर्ट है उनसे 1% के ये जो डिसीज है वो स्प्रेड होते हैं। एंड दैट्स व्हाई द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन आर एट रिस्क। तो यूरोप के अंदर ये काफी सारे रिस्क के अंदर होते हैं, इसीलिए जो मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स है उसके अंदर काफी ज्यादा जो चेकिंग है वो की जाती है। जो जिंदा पीक्स है उनके ऊपर भी काफी सारा जो ये है स्प्रेड आउट जो है वो होता है डिसीजेस का, तो उनको भी काफी सारा क्रॉस वेरिफिकेशन चेंजेस चेक्स किया जाता है। और जो कंटामिनेटेड जो ट्रांसपोर्ट्स है अप टू 1% ऑफ केसेस तो वो भी यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग है कि इसीलिए जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है काफी सारे जो चेक्स आउट्स है वो किए जाते हैं, ठीक है, चेक पोस्ट पे। देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये था कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर आपको पता चला होगा कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो बॉर्डर सिक्योरिटी ये है प्रोटेक्शन है, तो उसके अंदर भी कैसे ये नॉवेल फूड रेगुलेशन है और उसके लिए कैसे ये चीज़ें काम करती है, ठीक है। अगर नया कुछ प्रोडक्ट है और प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है देयर बॉर्डर्स एंड ऑल दिस थिंग। So thank you so much for watching this video. I'm your host and host Sagar Shirke sign off. And thank you so much for watching this video again and again. Thank you so much.